Hello students, we are going to discuss chemistry mains paper of 29th November. See, the first question of chemistry is increasing order of bond strength of O2, O2 minus, O2 2 minus and O2 plus is. So first of all, we will write electronic configuration of O2. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz 2, pi 2px2 is equal to pi 2py2, pi star 2px1 is equal to pi star 2py1. Okay, this is electronic configuration of O2. Now, for finding bond order, क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, so according to this you will get bond order of O2 as 2. And if we write molecule or ions and then bond order, if we calculate their bond order by this formula, so O2 O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2. O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होगा एंटी बॉन्डिंग से, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से रिमूव होगा. ओके, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा. सो इट विल बी 2.5. यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला. सो यू विल गेट 2.5. सिमिलरली O2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे. ओके, सो यू विल गेट बॉन्ड ऑर्डर 1.5. O2 2 minus will get bond order as 1. Okay, so now we know that bond strength is directly proportional to bond order. Okay, so according to this we can write the order of bond strength will be O2 plus, then O2, then O2 minus and O2 2 minus. So you have minimum bond strength. Okay, so more the bond order, more will be bond strength. So O2 plus का bond order maximum है, so उसका bond strength maximum होगा. Okay, next is question number 27. The correct order of boiling point is, so boiling point का correct order लिखना है. यहाँ पे fourth option, see fourth option is correct. H2O will have maximum boiling point, then H2TE, then H2SE and then H2S. So H2O will have maximum boiling point because it will have maximum boiling point क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अदर्स के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. H2T, H2SE, H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और LDF फोर्सेस होगा. एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन LDF फोर्सेस. सबसे पहले वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, देन अदर्स में हम लोग कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन देयर मोलर मास. ओके, सो H2T, H2SE, H2S all have LDF फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो अगर हम मोलर मास देखें तो H2T का मैक्सिमम मोलर मास होगा out of H2S, H2T, H2SE, H2S. H2T will have maximum molar mass, so it will have maximum boiling point out of these three. Okay, and out of these four maximum boiling point will be of H2O क्योंकि H2O आपका क्या है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो आपका मैक्सिमम होगा. देन H2T based on molar mass, H2T, H2SE, then H2S. Okay, similarly question number 28, question number 28 is also based on the same fact. Question number 28, which one has highest boiling point? Okay,
So again, same fact, LDF forces is directly proportional to molar mass or size. Okay, molar mass or molecular size. Molar mass or molecular size. So we know that out of helium, neon, krypton, and xenon, xenon will have maximum molar mass. So it will have maximum boiling point. Okay. So fourth option is correct. Question number 29. Which of the following is in increasing order of covalent character? So we have to find covalent character. If we see LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, so lithium is in +1 oxidation state, here it is +2, +3 and CCl4, carbon is +4 oxidation state. Now we know that more the charge on cation, more will be polarizing power, and more the polarizing power, more will be covalent character. Okay, so इनमें से मैक्सिमम चार्ज वाला जो कैटायन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा, CCl4 will have maximum covalent character and LiCl will have minimum covalent character based on charge on cation. Charge on cation, right? So correct answer will be C. LiCl, then BeCl2, then BCl3, and then CCl4. Next is question number 30. See, question number 30, we have to find the basic character of given oxides. So basic character of oxides is directly proportional to metallic character. ओके, हमें पता है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. सो मोर द मेटालिक कैरेक्टर, मोर विल बी बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स. इफ वी सी द पोजीशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिलिकॉन इन पीरियोडिक टेबल, दिस इज द पोजीशन. सोडियम आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है, तो मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा, और सिलिकॉन आपका राइट में आता है, एक्सट्रीम राइट में. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो फर्स्ट आपका आएगा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन कॉपर, देन सिलिकॉन. जिसमें आपका सोडियम मैग्नीशियम आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो जाएंगे, कॉपर आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. ओके, जो एलिमेंट्स का जो पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है. तो मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा, सोडियम में. ओके, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स will also decrease. Okay, so maximum metallic character will be in Na2O, then MgO, then CO, then SiO2. Okay, so sodium has maximum metallic character, so it will have maximum basic character in its oxide. Silicon has minimum metallic character, so minimum basic character of oxide. Okay, more the metallic character, more will be basic character of oxide. Okay, next we will see question number 31. On the basis of molecular orbital theory, which is correct? Okay, C2 molecule is there. So first of all, we will write the electronic configuration of C2. So it is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Total we have to fill 6 into 2, 12 electrons. Okay, then pi 2px is equal to pi 2py and 2 electrons. Okay, total 12 electrons are there, and after that sigma 2pz, okay, which has 0 electrons. Okay, now see, this is highest occupied molecular orbital and this is lowest unoccupied molecular orbital. Okay,
So the bond order for C2 molecule is 2 and both bonds are sigma bonds. So अगर हम bond order calculate करें, bond order is equal to half of number of electron in bonding minus anti-bonding. So it will be half of bonding, number of electron in bonding is 2 to 4 to 6 to 8. 8 minus anti-bonding, it is 4 electrons. Okay, so it will be bond order will be 2. So it is correct, bond order is 2, both bonds are sigma bonds. So अगर हम bonds का nature देखें, so both bonds will have, जो आपका final last electrons आ रहा है वो pi molecular orbital में आ रहा है. लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा. जो आपका बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसकी वजह से बनेगा. सो बॉन्ड्स का जो नेचर होगा C2 में, बोथ बॉन्ड्स विल ऑफ पाई बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में जा रहा है. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, बोथ बॉन्ड्स आर नॉट सिग्मा, बोथ बॉन्ड्स आर पाई. बॉन्ड का नेचर डिसाइड करेगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई. नेक्स्ट इज द LUMO इन C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा टू पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. LUMO मीन्स होता है जो आपका अनऑक्युपाइड में लोएस्ट एनर्जी का है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स अनऑक्युपाइड, जो आपका ऑक्युपाइड नहीं है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, एंड लोएस्ट एनर्जी का है, अनऑक्युपाइड में लोएस्ट एनर्जी. सो दैट विल बी LUMO इज sigma 2pz. एंड व्हाट इज होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस जो आपका ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड में हाईएस्ट एनर्जी का, ऑक्युपाइड में हाईएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2 सॉरी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py. दिस इज होमो. सो second option is correct, second option is correct. The HOMO in C2 molecule are pi type of anti-bonding molecular orbital containing total 4 electrons. HOMO in C2 molecule is pi type. No, pi type anti-bonding बोला है. No, it is bonding. It is pi type but bonding. This is BMO, okay, not anti-bonding. So third option is incorrect. Second option is correct. Question number 32. The term that corrects for the attractive forces present in a real gas in van der Waals equation is, so attractive, we know that in van der Waals equation is P plus an square upon v square, v minus nb is equal to nRT. Now A represents attractive forces. A is related to attractive forces between the molecules and B is related to molecular size. This we have studied. B is related to molecular size, right? So the term that corrects for attractive forces is an square upon v square. So correct answer is an square upon v square, where B is related to molecular size, A is related to attractive force. Okay, and correction, this is called pressure correction term or correction terms for attractive force, and this is volume correction term. B is volume correction term and an square upon v square is pressure correction term or correction term for attractive force. So correct option for question number 32 will be second option is correct. Question number 33. Which type of pi bond is present in POCl3? POCl3. So POCl3 first we will write this is POCl3. Okay. तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा. Hybridization is sp3. Hybridization is sp3. So which type of orbitals are used? So sp3 अगर hybridization है that means 3p already यूज हो चुके हैं. अगर हम phosphorus की बात करें so 1s and 3p is already used. So हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड आपके कौन से बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपके 1s एंड 3p यूज हो चुके हैं. 1s प्लस 3p ये आपके यूज हो चुके हैं. तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बचेगा, d, 3d. दैट मीन्स ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो 3d की हेल्प से बनेगा.
एंड ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 2p, एंड फॉस्फोरस का 3d। यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का नेचर हो जाएगा 3d पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई, और यू कैन राइट 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई। ओके, so the nature of pi bond is 2p pi 3d pi, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। राइट, समझ में आ रहा है आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, sp3 आ रहा है, तो फॉस्फोरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 1s and 3p, 1s and 3p orbitals are involved in hybridization. So rest of the unhybrid orbital will form pi bond. So unhybrid orbital में आपके d आएंगे, that means phosphorus का d orbital यूज होगा, ऑक्सीजन का p orbital यूज होगा। So the nature of pi bond is 2p pi 3d pi. Question number 34. In which of the following pairs of molecules or ions both the species are not likely to exist? So इसका जो कॉन्सेप्ट है, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज जीरो, दैट मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। दिस रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल और आयोन डू नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है, H2 प्लस, तो H2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जीरो। H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा। He2 के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इज जीरो। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जीरो। सो बोथ H2 प्लस and He2 do not exist. Correct option is H2 2 plus and He2. Third option is correct. Question number 35. The rate of diffusion of SO2, CO2, PCl3 and SO3. So we know that rate of diffusion, ROD, rate of diffusion is inversely proportional to root of molar mass. Rate of diffusion is inversely proportional to molar mass. Right? तो यहाँ पे हम लोग मोलर मास देख लेंगे। तो अगर हम मोलर मास देखें तो मिनिमम मोलर मास है CO2 का, देन SO2, देन SO3 एंड देन PCl3। So CO2 has least molar mass. Least molar mass means maximum rate of diffusion according to this formula. Least molar mass, maximum rate of diffusion. PCl3 की अगर हम बात करें, PCl3 has maximum molar mass. Maximum molar mass means least rate of diffusion. Okay, so question is very simple. CO2 has minimum molar mass, so maximum rate of diffusion. PCl3 has maximum molar mass, so minimum rate of diffusion. So correct option is fourth, CO2, SO2, SO3 and PCl3. Question number 36. Okay, question number 36 is graph based question. तो प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। प्रेशर एंड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू PM बाई RT। तो यहां से हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT डिवाइडेड बाई M। ओके, नाउ सी हम लोग डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, डेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, डेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं एंड कांस्टेंट डेंसिटी पे देखते हैं हम लोग। सपोज हमने डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट डेंसिटी पे अगर हमने डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया है, आर तो आपका कांस्टेंट ही है, एंड मोलर मास सेम गैस के लिए हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये सेम गैस के लिए ड्रॉ किया है, राइट, सेम गैस के लिए ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मोलर मास भी कांस्टेंट होगा।
So density is constant, R is constant, molar mass is constant. So at constant density, what we can write, P is directly proportional to T at constant density, right? P is directly proportional to T. मीन्स जिस गैस के लिए प्रेशर ज्यादा होगा, जिस गैस के लिए प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा एट कांस्टेंट डेंसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दिया कि कांस्टेंट डेंसिटी पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन पे आपका डेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे T1 T2 T3 इसको हम लोग, दिस इज T1, फर्स्ट ग्राफ आपका T1 टेम्परेचर पे प्लॉट किया है, सेकंड ग्राफ T2, थर्ड ग्राफ T3 टेम्परेचर पे प्लॉट किया है। तो फर्स्ट ग्राफ के लिए प्रेशर मैक्सिमम है, तो यहाँ पे डेंसिटी भी सॉरी टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। थर्ड ग्राफ के लिए प्रेशर मिनिमम है, सी प्रेशर इज मिनिमम फॉर थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ के लिए टेम्परेचर भी मिनिमम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रिलेशन निकाल लिया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट डेंसिटी, मोर द प्रेशर मोर इज टेम्परेचर। सो फर्स्ट ग्राफ के लिए प्रेशर ज्यादा है आपका तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो रिलेशन विल बी T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, दिस इज करेक्ट रिलेशन। Okay, so we'll come to question number 37. The temperature at which the most probable speed of CO2 molecule will be twice as speed at 50 degrees Celsius. Okay, so first of all we'll write the formula of most probable speed. Most probable speed is equal to root under 2 RT upon M. Okay, so for comparing most probable speed at two different temperatures, we can write U1 upon U2 is equal to रूट ऑफ T1 बाई T2, बिकॉज हमने सेम गैस को कंपेयर कर रहे हैं, गैस सेम है तो मोलर मास आपका सेम होगा, 2R कांस्टेंट है, सो रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ टू गैस, रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टू टेम्परेचर विल बी रेशियो ऑफ रूट ऑफ रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन most probable speed of CO2 is twice, so this will be 1 by 2, we can write like this, is equal to T1 is given in degree Celsius, so we have to convert that in Kelvin. Okay, so it will be 273 plus 50 divided by T2 we have to find, so from here we can write 1 by 4 is equal to, this will be 323 divided by T2. Okay, so T2 will be 4 into 323, that is 1292 Kelvin, or T2 will be 1292 minus 273, that is 1019 degree Celsius. This will be the correct answer, 1019. Okay, fourth option is correct. So the point is ratio of most probable speed at two different temperature is root of ratio of their temperature, but the temperature should be in Kelvin. Question number 38. See, in question number 38, equal weights of CH4 and O2 is given, and you have to find the fraction of total pressure exerted by O2. So first of all, what do you mean by fraction of total pressure exerted by O2? जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 मींस इज टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. ओके, सो वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. तो यहाँ पे इक्वल वेट दिया है, टू गैसेस आर देयर, CH4 एंड O2. इफ वी सी मोलर मास ऑफ CH4 इज 16, मोलर मास ऑफ CH4 इज 16 एंड O2 इज 32. इक्वल वेट दिया हुआ है, सो लेट द वेट इज 32 ग्राम फॉर CH4 एंड O2 ऑल्सो 32 ग्राम. हमने 32 ग्राम हमने एज्यूम कर लिया, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, आप यहाँ पे वेट कुछ भी एज्यूम करेंगे आंसर सेम आएगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 1 आ जाएंगे.
ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1/3, दिस इज मोल फ्रैक्शन. So we had to find fraction of total pressure exerted by O2, that is mole fraction of O2. So it will be 1/3. So correct answer is 1/3. 1/3 is the correct answer. Question number 39. At low pressure, compressibility factor of CO2 will be. So first of all, we will write van der Waal equation in term at 1 mole. Okay, van der Waal equation when number of moles of gas is 1. So this is van der Waal equation, VGE, van der Waal gas equation for 1 mole. Okay. Now at low pressure, लो प्रेशर पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा. एट लो प्रेशर वॉल्यूम विल बी हाई. इन सच सिचुएशन V minus B can be written as V, means we can neglect B. We can neglect B. B is molecular size and V, this V is वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में हम लोग मॉलिक्यूलर साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी कम है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तो हम लोग स्मॉल बी दैट इज मॉलिक्यूलर साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V माइनस बी की जगह पे V पुट करेंगे, राइट. सो द इक्वेशन विल बिकम P प्लस, नेग्लेक्टिंग दिस B, small b, so P plus A upon V square into V is equal to RT. Now expand this, multiply this V inside, so you will get PV plus A upon V is equal to RT, or we can write PV divided by RT, dividing RT both sides, divide RT both sides, so you will get PV divided by RT plus A upon VRT will be equal to 1. PV by RT is Z, Z is equal to 1 minus A upon VRT. So this is the expression of Z at low pressure. So Z will be equal to 1 minus A upon VRT. So correct option is, first option is correct. Okay. So at high pressure, volume will be high, at low pressure volume will be high, so we have neglected small b. Question number 40. Paramagnetism is observed in. Okay, so paramagnetic, अगर हम O2 का, just now we have before some time we have written electronic configuration of O2, and O2 में highest occupied molecular orbital जो O2 का था, that was 2 pi 2px star 1 is equal to pi star 2py1. So paramagnetism means unpaired electron. Paramagnetism means unpaired electron. तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ N2, O2, हीलियम एंड O2 माइनस विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O2 मॉलिक्यूल के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. So paramagnetism will be observed in O2. Correct option is O2. N2 के अंदर आपके नहीं आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड आएंगे. Similarly helium and O2 minus के अंदर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे. So they are diamagnetic. Okay. Since unpaired electron is present in O2, so it will have paramagnetism. So correct option is 2. Question number 41. The correct relation of Charles law. So we know Charles law. According to Charles law, V is directly proportional to T if number of moles is constant and pressure is constant. This is Charles law. Okay, so from here we can write V is equal to K into T. V is equal to K into T. Okay, so Y हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन V एंड T, टेम्परेचर इन केल्विन. तो इसको y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू mx से रिलेट करेंगे. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग जीरो इंटरसेप्ट. तो आपका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा. ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा,
इसलिए नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर आपका 0 केल्विन नहीं हो सकता है, और वॉल्यूम भी आपका 0 लीटर नहीं हो सकता। वॉल्यूम वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है, टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता। 0 केल्विन इज ओनली थेरेटिकल टेम्परेचर, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आप ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे गैप आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। Question number 42 is for a fixed amount of ideal gas, which of the following plots is correct? So if number of moles is constant and temperature is also constant, it is given that temperature is also constant. So we will apply Boyle's law here. Okay. According to Boyle's law, P is inversely proportional to V, or PV is equal to constant. We can write from here like P is equal to K into 1 by V. We can write this also, और PV is equal to constant. So PV आपका constant हो गया. That means अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें PV एंड V में अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV आपका कांस्टेंट होगा, मींस ग्राफ इस तरह से आएगा। तो बेसिकली होगा क्या, PV कांस्टेंट है, दैट मींस अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बट प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस यहाँ पे आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर आपका क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा, बट द प्रोडक्ट ऑफ P एंड V विल कांस्टेंट। तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें PV एंड P में, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो P इंक्रीज कर रहे हैं, तो P इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। इफ यू इंक्रीज P, V will decrease, वॉल्यूम विल डिक्रीज, बट द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। एंड थर्ड ग्राफ अगर हम देखें, so that means फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट ही है, एंड थर्ड ग्राफ अगर हम देखें तो P एंड 1 by V के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस P इज इक्वल टू K इंटू V, Y इज इक्वल टू MX से रिलेट कर सकते हैं। P एंड 1 by V के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा पासिंग टू ओरिजिन। यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा, P इज इक्वल टू K इंटू 1 by V, Y इज इक्वल टू MX से हमने रिलेट किया, स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके, अगेन यहाँ पे जो 1 by V 0 नहीं हो सकता है, तो ये आपका थोड़ा सा गैप आएगा कर्व में। ओके, सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 42 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2 3 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, all are correct. Okay, coming to question number 43. If PVT represent the pressure, volume and temperature, then according to Boyle's law, which of the following is correct? So it's very simple. According to Boyle's law, V is inversely proportional to pressure, or P is inversely proportional to volume at constant temperature and constant number of moles. So correct option is third option is correct. P is inversely proportional to volume. Question number 44. Okay, in question number 44, one graph is given. So first of all, we will draw graph. Graph between pressure and sorry, graph between pressure and volume is given. Three graphs are given and it is marked as A, B and C. Okay. So यहाँ पे आपको बोला है assuming all the gas behave ideally, which of the following graph is related to argon gas? Okay. So according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. Okay, and according to question यहाँ पे बोला है they are plotted at constant temperature. Temperature is constant. It is given temperature is constant. So आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है, एंड V को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। एक प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं और V को कांस्टेंट कर देते हैं।
तो वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, मीन्स v को कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, v को कांस्टेंट कर दिया, r एंड t ऑलरेडी ये आपके कांस्टेंट है। सो व्हाट वी कैन राइट, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n if v is constant, t already constant है, right? v is directly proportional to n and what is n, mass given upon molar mass। तो यहाँ पे मोलर मास, वेट तो आपका कांस्टेंट ही है, सभी 10 grams each of helium, neon and argon is given, that means weight is also constant, weight of all the gases is constant, so we can write p is inversely proportional to molar mass। that means जिस गैस के लिए आपका प्रेशर मैक्सिमम होगा, P मैक्सिमम होगा, उस गैस का मोलर मास आपका मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है बात? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। दैट मीन्स जिस गैस के लिए प्रेशर मैक्सिमम होगा उसका मोलर मास आपका मिनिमम होगा। तो यहाँ पे कौन से गैस के लिए प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, C गैस के लिए प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, C के लिए P मैक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C गैस के लिए आपका प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है तो मोलर मास मिनिमम होगा। ओके, तो C के लिए आपका हो जाएगा मिनिमम मोलर, वी कैन राइट हियर C के लिए आपका हो जाएगा मोलर मास मिनिमम। एंड सिमिलरली A के लिए क्या हो रहा है, A के लिए आपका प्रेशर मिनिमम है, तो मोलर मास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, A का आपका मैक्सिमम मोलर मास होगा। So now we can compare easily which is helium, which is neon, which is argon. So that means C आपका मिनिमम मोलर मास है, तो that means C हीलियम है, एंड A आपका मैक्सिमम मोलर मास होना चाहिए, that means A आपका आर्गन है। तो यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो A इज आर्गन, B इज नियॉन एंड C हैविंग मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम मोलर मास, इट इज हीलियम। ओके, सो वन सी अगेन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो भी ग्राफ प्लॉट किया था उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। सो वॉल्यूम जब हमने कांस्टेंट किया, T ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और W बाई मोलर मास। Weight is constant according to question, so we can write P is inversely proportional to molar mass। That means जिस गैस के लिए प्रेशर मैक्सिमम होगा उसका मोलर मास मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C गैस का प्रेशर मैक्सिमम है तो उसका मोलर मास मिनिमम होगा, दैट मीन्स C इज हीलियम। A गैस के लिए प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे A गैस का प्रेशर मिनिमम है, सो A का मोलर मास मैक्सिमम होगा, सो A इज आर्गन। सो करेक्ट ऑप्शन इज A is argon। Okay, one is correct। Question number 45, which of the following species contain a bonding lowest unoccupied molecular orbital। तो Li2 की अगर हम बात करें, तो Li2 having 6 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिथियम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s0। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो जाएगा एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर इज सिग्मा स्टार 2s। so bonding LUMO means which the lowest unoccupied molecular orbital should be bonding। so here lowest unoccupied molecular orbital is ABMO, anti bonding, you can see here it is ABMO, so first option is incorrect। Similarly B2 की अगर हम बात करें, तो B2 having 10 electrons, so sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px1 is equal to pi 2py1। okay, 2 to 4 to 6 to 8 and 2 10 electrons sigma 2pz0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 2pz, it is lowest unoccupied molecular orbital and this is bonding। okay, so correct option is second is correct option। फर्स्ट इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे LUMO आपका एंटी बॉन्डिंग है, क्वेश्चन में आपको बॉन्डिंग LUMO पूछा है, मींस लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी बॉन्डिंग नेचर। ओके, अगर हम थर्ड की बात करें N2 की,
ओके, तो सिमिलरली N2 में लिख सकते हैं N2 हैज 14 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, then pi 2px 2 is equal to pi 2py 2, and then sigma 2pz 2, pi 2px star 0 is equal to pi 2py star 0. ठीक है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आर दिए। तो यहाँ पे आप ल्यूमो देख सकते हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर इज this pi 2px and it is of anti bonding nature. Okay, so third option is also not correct. We have to see which has bonding nature. So correct option will be 2. Next is question number 46. What is bond order of underlined species? So compound is NOBF4. So NOBF4 को अगर हम split करें, so it will be present as NO plus BF4 minus. ठीक है, NO plus BF4 minus. It is ionic compound NO plus BF4 minus. So basically ये indirect question है. You have to find the bond order of NO plus. We have to find bond order of NO plus. And MOT में आपने देखा था NO plus की bond order किस तरह से calculate करेंगे. So total electron अगर हम discuss करें तो 8 plus 7, 15 minus 1, that is 14 electron. So total 14 electron we have to fill. So it will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz 2, pi 2px 2 is equal to pi 2py 2. Okay, and next हो जाएंगे आपके pi star 2px 0 is equal to pi star, that is ल्यूमो की बात कर रहे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एंड लास्ट विल बी सिग्मा 2pz स्टार 0. ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा सिग्मा देन पाई. ओके, so from here you have to find bond order. So bond order half of number of electron in bonding minus anti bonding. So half of number of electron in bonding 2 to 4 to 6 to 8 and to 10. 10 minus anti bonding is 4. So it will be, you will get 6 by 2, that is 3. So bond order of NO plus will be 3. So correct answer is 3. Question number 47. See in question number 47, how many of the following statements are correct according to the property indicated? So first one is order of polarizability I minus Br minus Cl minus F minus. So we know that more the radius of anion, more will be polarizability. So what will be order of polarizability? I minus Br minus Cl minus F minus. This is correct. First statement is correct. More the radius of anion, more will be polarizability. Second one is, now see, radius of cation is given. So we know that lesser the radius of cation, more will be polarizing power. कैटायन की साइज स्मॉल, जितनी ज्यादा स्मॉल होगी उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है. सो स्मॉलर द कैटायन, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर. तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए Li प्लस Na प्लस K प्लस देन Cs प्लस, एंड इट इज गिवन लाइक दैट ऑल्सो. क्वेश्चन में भी आपका इसी तरह से दिया हुआ है. सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो चार्ज डिफरेंट है थर्ड में, Li प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस. सो वी नो दैट मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर. क्योंकि कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर. तो यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए Li प्लस देन Mg2 प्लस देन Al3 प्लस. बट जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है आपका वो Li प्लस को ज्यादा बोला है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ विल फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज order of
आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो कोवेलेंट कैरेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका LI NaI एंड KI। तो एनायन सेम है, कैटायन आपका डिफरेंट है, एंड कैटायन की साइज आपकी वेरी कर रही है। सो lesser the size of cation, more is the polarizing power, more the polarizing power, more is the covalent character, and more the covalent character, lesser will be ionic character, because covalent character and ionic character are inversely proportional. So that means जिस कैटायन का आपका मिनिमम रेडियस होगा उसका आपका आयनिक कैरेक्टर भी मिनिमम होगा। सो मिनिमम रेडियस लिथियम का है, सो लिथियम का आयनिक कैरेक्टर मिनिमम होगा, देन NaI देन KI, मिनिमम रेडियस मिनिमम आयनिक कैरेक्टर। सो दिस विल बी द ऑर्डर। ओके, एंड क्वेश्चन में आपको दिया है LI का मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर गिवन है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो LI का क्या होगा, स्मॉल साइज है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, अगर हम ये आपका जो ऑर्डर हो गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ, दिस इज आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड में मैक्सिमम होगा, देन NaI देन KI, क्योंकि लिथियम की साइज आपकी स्मॉल है तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है उसका रिवर्स होगा आपका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सो दिस शुड बी द केस, बट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज रिवर्स ऑफ दैट। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, next we will see fifth option. Fifth option is AgI, AgBr and AgCl. We have to compare the solubility in water. So first we will write the fact, solubility in water is directly proportional to ionic character. Okay, because water क्या होता है आपका polar होता है, so the compound having more ionic character will be dissolved more, will have more tendency to get dissolved, right, like dissolves like. So water solubility is directly proportional to ionic character, which is inversely proportional to covalent character. Means the compound which has maximum ionic character, more the ionic character, more will be solubility in water. Okay, तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, फर्स्ट कोवेलेंट CC, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अगर हम लिखे AgI AgBr AgCl, तो AgI का मैक्सिमम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, देन AgBr देन AgCl, बिकॉज AgI में I माइनस की साइज क्या है, मैक्सिमम है। So more the size of an ion, more is the polarizability, more the polarizability, more is the covalent character. So this is the order of covalent character. So ionic character का order क्या हो जाएगा, इसका just reverse हो जाएगा, ionic character और water solubility, water solubility. So AgCl will have maximum water solubility out of these three. So यहाँ पे जो आपको order दिया है solubility in water, AgI का मैक्सिमम दिया, which is wrong. Okay, so this is also incorrect. Fifth is also incorrect. Now we will come to sixth one. Sixth one में आपको बोला है कि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर हम सिलिकॉन ऑक्सीजन में देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये आपका क्या है, नॉन पोलर है, दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। So that means silicon oxygen has more ionic character or less covalent. This is less covalent. Okay, so percent covalent character will be more in silicon silicon. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने की वजह से आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज गिवन करेक्ट। ओके, so total correct statement we have to find total number of correct statement. So total number of correct statement will be, first is correct 1 2, third is incorrect, fourth is also incorrect, this is also incorrect, and sixth is also correct. So total correct statement will be 3. Your answer will be 3. Question number 48. How many of the following will show zero dipole moment? तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, राइट, तो
1,4 डाई हाइड्रोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी फिनोल, ठीक है, ये जो कंपाउंड आपका, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं आता है, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाता, तो ये डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, ये आपका एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाता है। तो दिस इज फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूल और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। सेकेंड वन में अगर हम बात करें तो सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, थ्री वेक्टर्स आर देयर एट 120 डिग्री एंगल, three vector at 120 degree angle, resultant dipole moment is zero, so this is mu is equal to zero, non-polar। थर्ड में भी आपका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, थर्ड में भी आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, mu is equal to जीरो। फोर्थ में अगर हम बात करें, फोर्थ कंपाउंड बी आर एंड बी आर, हियर इट इज सी एल एंड सी एल, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, सी एल एंड सी एल डाइपोल मोमेंट कैंसल, सिमिलरली बी आर एंड बी आर डाइपोल मोमेंट कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, बी आर का डाइपोल मोमेंट बी आर कैंसिल कर देगा, सी एल का डाइपोल मोमेंट सी एल कैंसिल कर देगा, 180 डिग्री पे, राइट, so here also dipole moment will be zero। ट्रांस की बात करते हैं अगर हम, ट्रांस एल्कीन, दिस इज ट्रांस एल्कीन, जब आपके सी एल एंड सी एल 180 डिग्री पे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे डाइपोल, इधर सी एल आपका जाएगा, डाइपोल इधर बनेगा, 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट जो सिस फॉर्म है, जब आपके दोनों ही सी एल 90 डिग्री पे होंगे, उसको बोलते हैं आप सिस फॉर्म। तो सिस जो एल्कीन है, सिस एल्कीन में आपका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू आर, वो कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो सी वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीरो डाइपोल मोमेंट, so this is 1 2 3 and this is 4, so correct answer will be 4 compound will have zero dipole moment। Question number 49, how many of the following will show hydrogen bonding, so अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा आपका, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अटैच्ड टू हाइड्रोजन लाइक NH OH और FH शुड बी देयर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से आपका हाइड्रोजन कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग like this, right, so yes, hydrogen bonding is possible। CH4 no hydrogen bonding, no hydrogen bonding, non polar compound, carbon hydrogen no electronegativity difference। Water, so first one is S, second one no hydrogen bonding, third one is water, water के अंदर hydrogen bonding possible होगा, all of you know that water has hydrogen bonding like this, so yes, here also possible। Fourth one is HI, no hydrogen bonding, बिकॉज इस टाइप का कोई आपका ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना, NHOHFH, राइट। फिफ्थ वन इज HF, यस, हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। सिक्स वन इज फॉर्मिक एसिड, यस, फॉर्मिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। फॉर्मिक एसिड के अंदर किस तरह से पॉसिबल है, देखिए आप, इस तरह से होगा, this is one molecule of formic acid and this is second molecule of formic acid, so here also you can see hydrogen bonding is possible, yes, here also hydrogen bonding is possible, okay। seventh one BOH whole thrice और बोरिक एसिड, BOH whole thrice का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होता है, ओके। सो बोरिक एसिड का वन मॉलिक्यूल एंड बोरिक एसिड का जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, सपोज दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल हियर, सी यू कैन सी हियर। सिमिलरली अदर हाइड्रोजन्स कैन आल्सो फॉर्म
intermolecular hydrogen bonding with other molecules. So here hydrogen bonding is possible between H and O. ओके अगर हम करेक्ट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बोरिक एसिड का. ओके so you can see here 3 boric acid molecules are there, 4 boric acid molecules are there. This is boric acid BOH whole thrice. This is first molecule, second molecule, third molecule, fourth molecule, and you can see that boric acid molecules are hydrogen bonded. Okay, so yes, hydrogen bonding is present in boric acid. And the last one is acetic acid, CH3COH. So CH3COH, just like formic acid, acetic acid will also sorry, acetic acid will also have hydrogen bonding. You can write like this. You can see here also hydrogen bonding is possible. So now count the number of molecules having hydrogen bonding. So ammonia, water, HF, formic acid, boric acid and acetic acid. So 6 is the correct answer. Okay, question number 50. Last question is the ratio of rate of diffusion of two gases A and B is 1:4, the ratio of molecular mass. So it's very easy question. We know that rate of diffusion is inversely proportional to molar mass. So we can write R1 by R2 is equal to root of M2 upon M1. R1 by R2 is given 1:4. We have to find ratio of molar mass. Okay, so it will be 1 by 16 is equal to M2 by M1. M2 by M1. So what will be ratio of M1 and M2? 16. So 16 is the correct answer. Okay, so यहाँ पे आपको M1 and M2 का रेशियो पूछा हुआ था. So M1 by M2 will be 16. This is the correct answer. 16 is the correct answer. So this was the last question. So thank you.